आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन प्राइसिंग एंड ग्रीक्स। जब हम ऑप्शंस के ट्रेड्स लेते हैं, चाहे हम कॉल ऑप्शंस के ट्रेड ले रहे हैं या पुट ऑप्शंस के ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है अगर हम एज ऑप्शन बायर हैं। चाहे हम कॉल ऑप्शन की बात करें चाहे पुट ऑप्शन की बात करें बायर्स। तो किस बेसिस पे जो हमारा है प्रीमियम डिफाइन होता है, और ये प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे जो हमारा प्रीमियम है वो एक फ्लक्चुएट करता है। एक आज अपने ऑप्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसका जो ऑप्शन प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो वो एक प्रीमियम है, फ्लक्चुएट करता है विद द ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ऑफ द मार्केट और ड्यूरिंग द डेज ऑफ द मार्केट एज द मार्केट अप्रोच और टू द एक्सपायरी। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के हम इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, एक ये बेसिक्स ऑफ एन ऑप्शन प्राइसिंग और एक ब्रेक्स का एक जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये बताता है कि हाउ ऑप्शन प्रीमियम इज बीइंग डिटरमाइंड, और जो ऑप्शंस हम ले रहे हैं वो इन दी मनी ऑप्शन है या एट दी मनी ऑप्शन है या आउट दी मनी ऑप्शंस हैं। और बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम की अगर हम बात करें, दो पार्ट्स हैं। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, दैट इज इन दी मनी ऑप्शन, एट दी मनी ऑप्शन और आउट दी मनी ऑप्शन। अनदर ऑप्शन प्रीमियम का जो कंपोनेंट है दैट इज अ टाइम वैल्यू। Time value is further, defined in two parts: volatility of the market, how the markets are being volatile. अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी तो उस केस में जो ऑप्शन प्रीमियम है वो ज्यादा होगा, बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट है, ऑप्शन प्रीमियम इज लाइकली टू बी मोर। एंड इफ डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू एक्सपायरेशन, कि जो आपकी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कितने नियरेस्ट टू द मेच्योरिटी हैं, लाइक वेर देर नियरेस्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, कि ये आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है नियरेस्ट टू द मेच्योरिटी। शॉर्टर द टाइम पीरियड, shorter the time period, lesser, shorter the time period, then more will be the theta that your premium is likely to be decayed. जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो नील हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, बिकॉज रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है व्हेन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द मेच्योरिटी वो बहुत लो रह जाती है। तो उस केस में आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाता है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। as the option approaches nearest to the maturity, then that your premium start getting decay. So these things, don't worry, we will discuss in detail. तो जैसा कि हमने पढ़ा, ऑप्शन प्रीमियम क्या है? द सम ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इफ द ऑप्शन हैज नॉट expired, it will always have some time value. The option may or may not have an intrinsic value depending upon it, whether it is in the money option, at the money option or out the money option. यूजली अगर हम बात करें कॉल ऑप्शंस की बात करें, इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स, तो कॉल ऑप्शन इन दी मनी कब होगी? जब लेट्स से एक हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस है किसी स्टॉक का ₹240, और जिस दिन ऑप्शन हम मेच्योरिटी की टाइम पे अगर हम बात करें, उसका जो स्पॉट प्राइस है वो है लेट्स से 300। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय कर रखी है, कॉल ऑप्शन बाय है, तो उस केस में बायर को प्रॉफिट है, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस पे अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। इट मींस ही विल गेट अ स्टॉक फॉर ₹240 रेदर देन 300। तो इसकी बात करें कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट ऑप्शन इज इन द मनी, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन बायर है उसको ₹60 पर स्टॉक पे फायदा हुआ है। सो दिस इज इन द मनी ऑप्शन। लेट्स से कि जिस दिन स्ट्राइक प्राइस हमारा 240 है और स्पॉट प्राइस मेच्योरिटी को भी 240 है, तो ये क्या हुई? ही में अवेल द ऑप्शन और नॉट अवेल द ऑप्शन। तो उस केस में देर इज नो सच लॉस। और लेट्स simplify this equation at the money option. Let's say he had paid an option premium for buying a stock for a stock price. He had paid an option premium, let's say ₹20. He has paid an option premium.
एंड ऑन दी एट द डेट ऑफ द मेच्योरिटी जो उसका स्पॉट प्राइस है स्टॉक का वो है 260. देन द बायर इज इन इन अ लॉस पोजीशन. क्यों? क्योंकि 260 पे 260 उसका स्पॉट प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस है 240. तो टेक्निकली तो उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. अगर वो स्ट्राइक प्राइस अपनी एक्सरसाइज करता है तो टेक्निकली उसे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. बट 20 रुपीज उसने ऑप्शन प्रीमियम भी पे किया हुआ है बिकॉज ऑप्शन एक्सरसाइज की है, ऑप्शन प्रीमियम पे किया है. तो जो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ वो उसके 20 रुपीज के ऑप्शन प्रीमियम से ऑफसेट हो गया. तो इस केस में बायर क्या हुआ, उस पे आ गया, नील पोजीशन पे आ गया. जो उसका पे ऑफ प्रोफाइल है वो ये कहें कि नो लॉस नो गेन है. तो इस केस में तो दिस इज कॉल्ड एट द मनी ऑप्शन. अगर हम बात करते हैं आउट द मनी ऑप्शन की बात करते हैं, लेट्स से हमारा स्ट्राइक प्राइस है 240 और उस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी को जो स्पॉट प्राइस जाता है वो आपका जाता है, स्पॉट प्राइस होता है लेट्स से 220. तो वो स्ट्राइक प्राइस नहीं एक्सरसाइज करेगा क्योंकि वो मार्केट से, कैश मार्केट से वो स्टॉक बाय कर लेगा क्योंकि उसको स्टॉक 220 का मिल रहा है. वो 220 का मिल रहा है तो उस केस में जो उसने प्रीमियम पे किया है दैट इज आउट द मनी ऑप्शन. इट मींस जब हमारी ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज कर रहे तो जो हमने प्रीमियम पे किया है ऑप्शन बैक का वही मैक्सिमम लॉस होगा कि बिकॉज ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन वट एवर द प्रीमियम ही हैज paid to the option writer, that will be his or her maximum loss. So time value of an option in turn depends upon how much time is remaining for an option to expire and how the volatile is the underlying. So five fundamental parameters, on which option price depends. That is a spot price of the underlying asset, strike price of an option, volatility of the underlying asset or time to expiration, and the interest rate. Let's discuss. So spot price and impact on option price. Talking about the call option price, when a spot price increases, it there will be likely to be chances that option become in the money option, and with the possibility of chances that option will become in the money, the value of the call option increases. And opposite to this, when a spot price decreases, the value of the call option decreases accordingly. In the same case, a put option, which is opposite, when a spot price increases, then there is a chances that the option will put option will be out the money, and that the put option buyer will not exercise that option. In that case, the value of the put option decreases. And in case where the spot price decreases, since the put option holders take an option with the view that the market is likely to be on a bearish sentiment. They have a sentiment of bearish for the market. So whenever the spot price decreases, the value of the put option increases accordingly. So call option, higher strike price means higher strike price. When you are exercising an option at a higher strike price, that it means it is a lower intrinsic value at a lower premium. Suppose there is a stock A which has strike price available 100 and different strike price available 120. So technically, it means when a person is buying a call option for a 120 strike price, it means uh, this strike price having the lower intrinsic value and the lower option premium when compared with the strike price of rupees 100. On because when you're exercising higher strike price, then you will be get a less protection against the inflation or the increase in the price of that security. So for example, if an underlying index Nifty is 17,562, then the call price strike price 17,600 and the strike price available 17,700, then this call will have more intrinsic value and higher price when it's compared to with this call. So put option. So put option is just opposite to the strike price option.
In what happened in case of put option? Higher strike price, higher put option value. Because in put option, the buyer is having a bearish sentiment that the market likely to be fall. When he are availing a higher strike price, it means he will get a higher price for the security, and so in this way he can hedge his risk of falling in a particular security. So higher strike price, higher intrinsic value, higher option premium. For example, just opposite to the call option, underlying index is 562, 17,562. That is the spot price. And there are two strikes available. One it is 17,700 and another is available at 17,600. So higher strike price will have higher intrinsic value and higher option premium, which is just opposite to the call option. So volatility, we are talking about the volatility. So volatility refers to the extent of price fluctuations in the underlying asset, whether it refers to up and down. Suppose on a particular day, the market rises suddenly and in first half of the market, and in the second of the market falls and market falls. Let's say on another subsequent day, the market falls in the first half and the second half, market rises. So this we can say the market is too volatile. And in India, the Indian VIX, Indian VIX is the indicator which reflects the market volatility. Higher, if market is to seems to be in higher volatile, either upward or downward, then they have an effect on the option premium. Higher volatility related to higher option premium and lower volatility related to lower option premium. So means when there is a higher volatility in the markets are volatile. Some days the market goes very upward and another day the market goes very down. So this is and the volatility. And India, the volatility of the index is basically measured by the Indian VIX, and so basically reflects how the market is volatile. And accordingly, when the market is too volatile, then they is going to affect on option premium. When for the stable market, the option premium will rarely increases very less. But for the higher volatility, where the VIGA is higher, the option premium fluctuates accordingly. Higher volatility leads to higher option premium. Reason. Greater volatility increases the likelihood of the option reaching in the money option, increasing its value. When the markets, when the markets are volatile, and there's a possibility that the your option will become in the money option depending upon the type of the option you are purchasing. Suppose the market is volatile, and there's a possibility that the market will rise due to volatility, and the call options on the same hand is likely to be possibility that the such call options will become in the money options. On another part, आप जब प्रेडिक्ट कर रहे हो कि जो मार्केट है वॉलेटाइल है और मार्केट डाउनवर्ड्स फॉर्म में जाने को तैयार है, तो उस केस में आपकी पुट दी मनी जो ऑप्शंस हैं वो इन दी मनी बनेंगी। जब जब एक चांसेस है कि जो बायर अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, चाहे कॉल बायर है पुट बायर है, तो मींस व्हेन ही इज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन देन ऑब्वियसली वो इन दी मनी की ऑप्शन को ही एक्सरसाइज करेगा ना। जब उसको लगेगा कि ऑप्शन उसके लिए प्रॉफिटेबल है एक्सरसाइज करने के लिए, तभी वो एक्सरसाइज करेगा ना। जितनी पॉसिबिलिटी होगी कि एक ऑप्शन इन दी मनी की तरफ मूव करेगी, उतना ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा, उतना ऑप्शन का प्रीमियम फ्लक्चुएट होगा, उतना ऑप्शन का प्रीमियम अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेगा। ये कहना चाहते हैं। So the greater volatility increases the likelihood of the option reaching in the money increasing its value. Both call and put option experience a rise in premium with higher volatility. So time to expiration impact on option premium. Effect on option premium: longer time to expiration, higher premium, and shorter time to expiration, premium. Since
is the chances that when an option contract reaches to its maturity, then there will be a chances that there will be a recent fluctuates in the market. And no, the longer the time period, the higher the premium, longer time to expiration, higher premium, and shorter time to expiration, lower premium. Because the longer, जितना time longer होगा उतनी volatility रहने की या markets में news adjust करने की या markets एक पर्टिकुलर न्यूज को कैसे एब्जॉर्ब करती है या मार्केट उस न्यूज को कैसे एडजस्ट करती है, डिस्काउंट करती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं लॉन्गर टाइम पीरियड में. तो लॉन्गर टाइम पीरियड gives you higher premium and the shorter time expiration lower premium. So that's why कहते हैं कि जो हमारा मार्केट का थीटा है, that will discuss कि थीटा जैसे जैसे हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो जो हमारा थीटा है दैट स्टार्ट डिकेइंग. जो हमारा प्रीमियम है टाइम टू एक्सपायरेशन का प्रीमियम वो स्टार्ट डिकेइंग. क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑप्शन प्रीमियम आपका डिफाइन करता है टू पार्ट्स पे, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे और एक होता है टाइम टू एक्सपायरेशन पे. जैसे जैसे आप टाइम टू एक्सपायरेशन के पास आते हो, मेच्योरिटी के पास आते हो, तो जो ऑप्शन प्रीमियम है जो थीटा है दैट स्टार्ट डिकेइंग. So interest rate on option premium. Interest rate influences particular those on individual stock indices more than options on future. Higher interest rate increases the higher call option premium, and the higher interest rate, leads to the lower put option premium. So with the higher interest rate, higher call option premium will be increases. There is a positive relationship between the interest rate and the call option premium. And call option premium, there is a positive relation and negative between interest rate and put option premium. And put option premium. Why it is so? Because the higher interest rate increase the opportunity of increase the opportunity cost of holding in a cash. So instead of buying the stock directly, the investor may prefer call options, increasing their demand and the price. So and since a put offer rights to sell the underlying, their value decreases as the interest rate rise. Investor may be less inclined to hedge with puts when rates are very high. So it is there is a positive relationship between the interest rate and the call option premium, where in case of the put option, there's an inverse relationship.